Girls, if you're planning to get married, then don't. It's a person who is speaking from experience. Hello everyone, welcome back to my channel. So for those who are new, my name is Himanshi and I'm an anchor, MC, master of ceremony. I host shows, wedding shows, corporate shows, and I love to create content for Instagram and for YouTube. So today, April 26, 2024, I got married and this is April going on. So I decided to make a video for the girls who are getting married this year, November, December or April. एंड दिस इज़ समथिंग जिससे मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, आई यूज्ड टू सी द वीडियोज़ ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉटन मैरिड एंड हाउ दे डिसाइड देयर बजट, हाउ दे डिसाइड देयर jewelry, and can they reuse the outfits they are wearing on their wedding, and all that things always used to pop up in my mind. So today I will answer all that questions, and I will break down my Ganesh Puja to Bidai every outfit for you guys, and I am very sure that you can get so much value out of it. And I am somebody who doesn't spend that much on, like I am a very I think and then spend. I don't spend ki paisa hai to nahi, I don't do that. So this video would be long and I am shooting this video in my relative's place, so you can also take your chai, coffee and lassi kyunki garmi chal rahi hai. And without wasting much of your time, let's get started. Okay, so before starting this video, I just want to clear two to three things. I stay in Nagpur and I am a Marwadi Brahmin girl. So the first function, so I got married in April 26th of April 2024. So the function already started. Marwadi family is something जहाँ हफ्तों से functions होते हैं और ये इसके लिए हम लोग बहुत famous भी है. So our first function, and I will only cover functions जिसके लिए मैंने proper outfit decide किया है, so that you can also get value out of it. हर कास्ट में, हर ट्रेडिशन में इन पूजाओं को अलग अलग बोलते हैं, बट इट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. सो हमारे मारवाड़ियों में इसे गणेश पूजा बोलते हैं, एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन जो बेसिक रिलेटिव्स एंड फैमिली के बीच में ही होता है. यूजुअली घर पे होता है ये चीज़. सो आई डिसाइडेड टू वेयर रेड साड़ी फॉर इट, एंड आई बॉट दैट साड़ी फ्रॉम राजस्थान, एंड माई बुआ बॉट इट फॉर मी. एंड it's a very, you can see the picture out here, it is a very basic sari, but I'm telling you, I kid you not, I have reused this sari multiple times, like for Karwa Chauth, for 2 to 3 Gangaur functions also, and for one more event I reused it, and I'm pretty sure I will reuse it again and again. So I bought it from Rajasthan, and I was very sure that red would be my color for Ganesh Puja. And when I saw these pictures, she sent me like on WhatsApp that I am in Rajasthan and you can just have a look at this saris. So instantly I got clicked and I said I want this red sari, and then there was a ready-made blouse for it and everything was there, and a basic jewelry I bought it, that silver hoops that we get na, silver earrings, uski bhi main picture yahan dal dungi, and basic, that's it. The sari costed me around 3,500 to 4,000. So a red sari, classic sari from Rajasthan, and this hoops, that's it. And bindiya जो मारवाड़ियों में usually पहना जाता है, that was my first look for my Ganesh Puja. Coming up, second was mehendi. So you can just look here, and in mehendi there were almost 500 to 600 people who were invited, and it was not at my place, it was at some bhavan जहाँ पे हमने खाटू श्याम जी के भजन रखा था. And yeah, so again for that outfit, I don't know for what reason, but I planned to wear neon at my mehendi, and I searched a lot, like a lot. I means if you're from Nagpur, you can just let me know, because Itwari, Birdi, Jaripatka, every market, I searched every market for my mehendi outfit, but I was not getting, and I was sure that I want to wear neon, but nahi mil raha tha bhai, nahi mil raha tha. And then suddenly there was this shop in Birdi, and I was just going, and I was not even planning to like buy my mehendi outfit from there, but suddenly I saw this outfit and I really liked it, and there I got my mehendi outfit from Nagpur only.
and it costed me around 3,000 only. सबको आज ही आवाज़ करनी है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेन रोड है बाहर इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है. सो इट कॉस्टेड मी 3,000. एंड वन मोर थिंग जो डिस्क्लेमर मुझे आप सभी को देना इज़ दैट मेरा जितना भी आउटफिट आई थॉट ऑफ बाइंग, behind every outfit, I know I was getting married, I know it was the first time I was getting married obviously, so but still as I host shows, back of the mind it was always there that I should buy clothes that I can reuse like 10 times, 12 times, 15 times. Being an anchor, I get this opportunity to wear multiple clothes so then I decided to buy every piece of clothing that I can reuse. And then again mehendi, I bought it 3,000 something and I liked it. Again for this I've not bought any jewelry. I've reused the jewelry I wore in my Ganesh puja for this thing, because उसका जा रहा था यार, मतलब उतना कोई लॉजिक नहीं बना मुझे, वो बहुत प्यारा दिख रहा था चोकर एंड देन दिस. सो एंड वन मोर थिंग, when I asked my mehendi wali didi, she said, Di, you have to sit there at the same position for 5 hours. So I decided I don't want anything जो बहुत ज़्यादा मुझे problem दे, because I have to go to washroom and then people would come and I have to greet them, so I have to like stand 1 or 2 times. And I was having mehendi इतना, मतलब आई एम अ बिग फैन. मेहंदी अभी भी थोड़ी गंगौर वाली बची है, इफ़ यू कैन सी. सो आई लव मेहंदी. सो आई वॉज श्योर कि भाई ताम झाम तो एकदम प्रॉपर लगानी है, धुला धुलेन एंड ऑल दैट वाली. सो आई डिसाइडेड टू हैव समथिंग वेरी लाइट, एंड जो ये आउटफिट मुझे मिला दैट वॉज वेरी लाइट. सो या दैट वॉज माई मेहंदी आउटफिट. नेक्स्ट जो मेरा आउटफिट था वो था व्हेन आई वॉज गोइंग फ्रॉम माई प्लेस टू माई हस्बैंड्स प्लेस. सो उसमें हमें जब हम हमारे ससुराल के मतलब शादी के पहले पहली बार अपने ससुराल जाते हैं, एंड दे वर वेलकमिंग मी, ढोल एंड नगाड़ा सब बज रहा था, नहीं बहू आ गई एंड ऑल दैट. तो मैंने साड़ी पहना था, पिंक कलर की साड़ी, एंड आई गॉट इट फ्रॉम रायपुर. आई गॉट इट फ्रॉम रायपुर एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 2,000 समथिंग. पिंक कलर की बेसिक थी, एंड आपको वहाँ पे साड़ी पहनना पड़ता है क्योंकि दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम आपके ससुराल में से इतने लोग आपको देख रहे हैं एंड यू आर गेटिंग वेलकम्ड एंड एवरीथिंग. सो आई वोर अ साड़ी दैट कॉस्टेड मी 2,000. आई विल पुट द वीडियोज आउट हियर, यू कैन चेक इट. रायपुर से जो भी है पंडरी मार्केट अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड आपकी शादी की बहुत अच्छी शॉपिंग वहाँ हो जाएगी. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटफिट, माई हल्दी आउटफिट. सो हल्दी भाई साहब बहुत घूमा यार. लाइक girls, please don't get married if you don't have patience, because wedding outfits especially for girls requires this much patience. So don't get married if you don't have patience, and if you have patience you will get good outfits. So yeah, so haldi outfit, and it was expensive. Yeah, it was expensive. So this was the outfit, and we have this theme of pink color. My husband also wore pink and I also wore pink, and it costed me 18,000. And again the jewelry I bought it from Itwari, and this what is that, जैसे बांधते नहीं ना छोटा सा, क्या बोलते, झुमका काइंड ऑफ, दैट ऑल्सो आई बॉट फ्रॉम इतवारी. एंड द हील्स आई बॉट फ्रॉम मेट्रो, एंड द टोटल आउटफिट कॉस्टेड मी अराउंड 21,000. Yeah, so I bought it 21,000 for my haldi outfit, and it was worth it because recently in Gangor I wore the outfit. Again I will put the image out here, and it was looking very pretty. I got so many compliments for the same outfit, and I am gonna reuse it till 2030. I promise you, I'm not gonna throw the outfit. I will reuse it multiple times for my shows because महंगा लिया है. Outfit संगीत. So ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव था. So I was searching for something which would be a gown, but again a gown that should look chic and classy, and I have a small height, so it should not look like कि भाई बच्ची को डाल दिया गाउन और पे चढ़ा दिया स्टेज में. आई शुड नॉट लुक लाइक दैट. सो गाउन के लिए भी बहुत भटके भाई, हम बहुत भटके. And then finally Sri Shivam, I bought it from Sri Shivam, and the cost was around 14,000.
एंड इट वॉज वर्थ इट. बट एक स्यापा हुआ है वो सबसे खराब, वो ये था when I was having my dance with my husband and suddenly वो जो पॉपअप्स आते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट मेरी आउटफिट जल गई, छोटे छोटे गड्ढे हो गए उसमें, तो आई कांट रीयूज दैट. बट अगेन इट कॉस्टेड मी अराउंड दैट मच, आई हैव टोल्ड अराउंड 14. एंड ज्वेलरी एंड शूज़ ये सब मिला के मुझे 16 to 17,000 का वो आउटफिट पड़ा था. And yeah, it was a very pretty outfit. When I first wore it and came out, my sister was like, ये हम ले रहे, इसको हम घर ले जा रहे. And I guess when I wore that, I was like, ये मैं संगीत में पहनूंगी and I'm gonna rock it. And I was looking very pretty. And the outfit was very nice. Again, I bought it from Shishiva. Now the last outfit of this video is my wedding outfit. एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि भाई वेडिंग आउटफिट कोई दोबारा नहीं पहनता है, जबकि मैंने पहन लिया एक और बार अभी. दैट आई विल टेल यू. सो आई बॉट इट फ्रॉम नागपुर ओनली. एंड आलीशान, जो भी नागपुर वाले उनको पता है, क्योंकि गाड़ी आप जब शुरू करो, गाड़ी में 50 बार आलीशान 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 चलता रहता है. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट आलीशान. सो और जो नागपुर से नहीं है, उनके कोई रिलेटिव है, उनसे भी पूछोगे. आलीशान इज़ अ वेरी फेमस शॉप आउट हियर एंड दे हैव अ गुड कलेक्शन. सो आई बॉट माई वेडिंग आउटफिट फ्रॉम आलीशान एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे उसको रीयूज़ नहीं करना है. एंड हमारे इसमें ऐसा होता है ना, जो वेडिंग आउटफिट होता है उसका कॉस्ट लड़के वाले देते हैं. एंड दे बाय फॉर अ गर्ल एंड वी बाय फॉर अ, like we bought for लड़का and they bought for लड़का, ऐसा होता. सो हमारे इसमें बहुत सिंपल था. वी डिसाइडेड कि वो ले सरप्राइज मिले, हम ले सरप्राइज मिले, इससे अच्छा हम एक दूसरे को पे कर देंगे. विल से कि आप इतने रखो, इसका ले लो, आप इतना रखो, आप इसका ले लो. एंड माई मदर इन लॉ, किड यू नॉट, शी वॉज लाइक, बेटा तेको जितने का लेना है ले, जितने का लेना है ले. एंड आई वॉज लाइक, नहीं भाई, मुझे पता है आई वॉन्ट री यूज इट, सो आई विल like think properly and then only. My budget, you will laugh on me, my budget was 10,000 for a wedding outfit and I was like 10,000 में मैं अच्छा से अच्छा wedding outfit ढूंढूंगी. and आप मुझे बहुत शाबाशी दोगे क्योंकि close to that मैंने ढूंढ भी लिया and I bought my wedding lehenga. It is very pretty for 11,000 and it was the same that I imagined to be. And I don't want red, I didn't want planned for pink, I just wanted this wedding lehenga. And again I roamed so much in Nagpur, Raipur, here, there, but finally I got it in Nagpur only from Alishan and it costed me total jewelry भी मैंने खरीदा नहीं था, रेंट पे लिया था. And one more thing, I have reused this outfit in Gangor. That video also I have like shot and put here. So 2 times I have wore the same outfit 2 times in Gangor and in my wedding. So पैसा वसूल हो गया भाई अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So yeah, so टोटल 15 से 16 तक गया था ज्वेलरी एंड देन फुटवेयर एंड एवरीथिंग. ये सब लड़के वाले इसका एक्सपेंस उठाते हैं, लड़के का आउटफिट लड़के वाले एक्सपेंस उठाते हैं, लड़की वाले उठाते हैं. So yeah, this were my all outfit for my wedding. And if you are planning to get married, I would just suggest you one thing. ये outfits ऊपर shelf में रखे रखे ज़िंदगी भर ना रहे, इसीलिए think properly, invest your money like wisely and buy outfits that you can reuse. And just don't think कि आज ये कलर ट्रेंडी है, like neon तो अगले 2 साल बाद भी रहेगा. It doesn't happen like that. So think wisely and then buy a outfit. Last but not the least, मेरा विदाई वाला outfit. And हमारे इसमें फंक्शन होता है भात, जिसमें आपको साड़ी मिलती है आपके मामा के साइड से. And I had to wear that sari for my फेरा and for my vidai, and it was a very pretty red and yellow sari. And I wore this and the pictures you can see they are very pretty. And I don't know the cost of this because my mama gave me that sari. Yeah, so overall my all outfit costed me around, outfit, jewelry and shoes all costed me around 50,000. And but the twist is that I'm gonna reuse it till I don't know. And thank you so much everybody for watching my channel. Do like, share and subscribe to my videos क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से चैनल आगे ग्रो करेगा. Thank you so much everybody. Bye bye. And if you need any more details, you can just comment. I will reply to all your comments. Bye bye.